Hello students, this is Suvendu Sir, your physics mentor, and this is our new lecture, that is lecture number 5 of class 10 CBSE science, and we are discussing about the class 10 CBSE physics. The chapter is light. This is our first physics chapter in our science book. So in our physics lecture number 5 up to lecture number 4 we have discussed the terms related to spherical mirror. Is that clear? So in this lecture we will complete the remaining terms available in that fact, and after that we will discuss the new Cartesian sign convention. That is the most critical and beautiful part of this chapter. Not critical, that is my mistake. This is not critical, it is very essential for the numerical actually. I hope it is clear to all of you. Let's start the topic. So terms related to spherical mirror. So our remaining term was, that is our focus. If I am not wrong, then we have discussed up to wait one second. So before proceeding to the focus, now listen, let's start one thing. Yes, यही पिक्चर से हम लोग इसको समझ पाएंगे. वेट, ये कौन सा मिरर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे तुमको? आई थिंक you all can tell the answer. This is our concave mirror. This is our concave mirror. If I am not wrong, this is our concave mirror. Another thing, we can take the help of convex mirror also. Okay, so see this picture. In दोनों केस में we will define the focus. Yes, so next term is our focus. So actually, when a parallel beam of light will fall on the concave mirror, what will happen? Now see, when a parallel beam of light, this is suppose your parallel rays, and these are coming parallel to principal axis. What is principal axis? We have already discussed. And after reflection, you remember, reflected ray passes through the focus. ये चीज को हम लोग आज ही कंप्लीट करेंगे. रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर. तो पहला थिंग, इन केस ऑफ convex also, you have to draw the same diagram like this. And after reflection, दिस इज जो रिफ्लेक्टेड रे, एंड इसको बैक साइड प्रोड्यूस करने से क्या होगा? बैक साइड प्रोड्यूस करने से ऐसा फील होगा जैसे कि वो फोकस से आ रहा है. बस अगेन ये देखो, यहीं पे हम लोग, दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे, एंड इफ दैट रिफ्लेक्टेड रे इज प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, then it appears to come from the focus. So without arrow mark, the diagram is invalid. Be careful. This is reflected ray, and these are incident rays. These are the reflected. Yes. So what is focus? When a parallel beam of light fall on the concave mirror, then after reflection, all the reflected rays meet each other at a common point.
Or if a parallel beam of light fall on the convex mirror, after reflection, all the reflected rays appears to diverge from a single point. That single point is called focus. So as per our figure, this is your focus F and this is the focus F. So in definition part, what we have to write? When a parallel beam of light falls on spherical mirror, दोनों के लिए एक की लैंग्वेज में लिख रहा हूं, then after reflection all the reflected rays meet each other at a common point, at a single point. ये कौन सा मिरर पे होगा? मीट इच अदर एट ए सिंगल पॉइंट, ब्रैकेट में लिख दोगे कॉनकेव मिरर, और appears to come from a single point, appears to come from a single point. come from लिखोगे नहीं तो appears to diverge from a single point, appears to come from a single point, ब्रैकेट में convex mirror is called focus. अभी हो गया तुम्हारे हिसाब से व्हाट इज फोकस? इज दैट क्लियर? एंड और एक चीज ध्यान रखो, द इमेजिनरी प्लेन passes through the focus and perpendicular to principal axis. Which one is principal axis? This is the principal axis. Line which joins the pole and center of curvature. Imaginary line that passes through pole and center of curvature, that is called principal axis. The line or the plane, sorry, the plane, imaginary plane that passes through the focus and perpendicular to principal axis, that plane is called focal plane. तो focal plane को भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. अभी देखो focal plane, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फोकल प्लेन. An imaginary plane that passes through focus and perpendicular to principal axis is called focal plane. So with this we have completed the terms related with spherical mirror, both in case of concave mirror, another one is convex mirror. ये भी लिख दो, ये चीज क्या है तुम्हारा? दिस इज योर concave mirror and this one is convex mirror. वेरी गुड. तो ये हो गया हमारा टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर. So before proceeding to the chapter, these are the common things. Yes. With this slide is completed. Now take the screenshot. Yes. So next come to our next topic is new Cartesian sign convention. One of the most important topic. New Cartesian sign convention. NCSC. New Cartesian sign convention. ओके. तो एक फिगर को मैं तुमको दिखा रहा हूं, देखो.
पहले दो पिक्चर को ऑब्जर्व करो अच्छे से। एक कॉनकेव मिरर का मैं शो कर रहा हूँ, दूसरा मैं शो करूंगा कॉन्वेक्स मिरर। एंड दोनों फिगर पे वी विल डिस्कस द साइन कन्वेंशन प्रॉपर्ली। सॉरी, आफ्टर दैट I will write 4 to 5 points based upon this Cartesian convention. Okay. So let us think. This is our. We know this is your concave mirror. This is your concave mirror. And अभी हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात नहीं करेंगे. Let us consider this is your object. This AB is our object. AB नामकरण दे दो. AB is our object. And ये होगा तो this is the image. A dash and this is B dash. A dash B dash is the image. तो पहला रूल क्या बोल रहा है देखो. As per the NCST, all the distances should measured from the pole of spherical mirror. यहाँ पे जो पिछले वाला साइड पे स्लाइड पे देखो, व्हाट इज फोकल लेंथ. ये पार्ट हमारा शायद पेंडिंग था. फोकल लेंथ पे हम लोग डिस्कशन नहीं किए हैं. फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल f. इसको हम लोग क्या मानेंगे देखो. फोकल लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस. डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर. तो सारा का सारा टर्म इसके साथ कंप्लीट हो गया. यस. तो इसी भी डायग्राम पे देखो, AB is our object and A dash B dash is the image. And पहला पॉइंट में क्या बोल रहा था, all the distances should be measured from the pole of a spherical mirror. So मैं बोलूंगा तुमको what is object distance. Object distance means पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस. What is image distance? पोल से लेकर A dash B dash इमेज तक का डिस्टेंस. इमेज से पोल नहीं होगा, वो चीज को याद रखो. And what is incident ray का डायरेक्शन? Who can say? इंसिडेंट रे मीन्स रे अप्रोचिंग टुवर्ड्स द मिरर. तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. वेरी गुड. तो रिमेंबर, डिस्टेंसेस मेजर्ड along the direction of incident ray taken as positive and opposite to direction of incident ray that is taken as negative. ओके. तो जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, कहां से शुरू करेंगे, मैं बोल रहा था पोल से लेकर शुरू होगा. तो एज पर द फिगर दिस पोल से लेकर फोकस, इसको हम लोग मानेंगे फोकल लेंथ. नाउ अगेन दिस पोल से लेकर, यही पोल से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस, ये इमेज दैट इज इमेज डिस्टेंस. देखो यहाँ मैं डॉटेड लाइन में शो कर रहा हूं. दिस इज द पोल. यस, line of action of pole. Then from the pole to center of curvature, this is radius of curvature. I think it is clear. This one is radius of curvature हो गया. Second thing, pole से लेकर object, that is your object distance. चार thing समझ में आ गया तुमको. तो starting from pole to different portion. देखो distances measured along the incident ray positive, ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे दैट इज नेगेटिव. तो देखो पोल से लेकर फोकस ये डिस्टेंस ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे हो रहा है, तो दिस इज नेगेटिव ऑफ f माइनस f. देन पोल से लेकर इमेज दैट इज इमेज डिस्टेंस v, बट इट इज ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे, दिस इज माइनस v. नेक्स्ट पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन वो ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे हो रहा है, सो माइनस r. एंड पोल टू ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, but opposite to direction of incident ray taken as negative. Very simple. Again, upward height with respect to principal axis always positive होगा and downward height with respect to principal axis always negative होगा. तो height of object को मैं ले रहा हूँ h o and height of image को मैं मान रहा हूँ h i. तो इसी हिसाब से ये क्या होगा, upward height with respect to principal axis, so this is height of object, so plus. And this is downward height with respect to principal axis, so height of image लेकिन वो माइनस होगा. वेरी सिंपल साइन कन्वेंशन, वेरी सिंपल. एंड लास्ट लाइन क्या है, ऑलवेज ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर इन सच अ वे दैट इट मस्ट कोइंसाइड विथ एक्स एक्सिस. एक चीज ध्यान रखो,
मिरर के फ्रंट पे जो भी चीज हम लोग करेंगे ना सॉलिड लाइन पे डिपेंड होगा। बिहाइंड द मिरर जो भी करो डॉटेड लाइन। बट मैं यहाँ पे जो डायग्राम शो कर रहा हूँ तुमको, देखो बिहाइंड द मिरर प्रिंसिपल एक्सिस पे अवेलेबल है, बट दिस इज नॉट डॉटेड, दिस इज सॉलिड। व्हाई? बिकॉज एज पर द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन प्रिंसिपल एक्सिस मस्ट कोइंसाइड विथ एक्स एक्सिस। तो एक डॉटेड लाइन एक सॉलिड लाइन के ऊपर अवेलेबल होगा तो होल चीज क्या दिखाई देगा हमको? सॉलिड ही दिखाई देगा। दैट्स द रीजन। डोंट थिंक दैट इट शुड बी डॉटेड इन फॉरवर्ड। I think the sign convention in case of concave mirror, is that clear? Next come to in case of convex mirror. Okay, in case of convex mirror सेम चीज को हम लोग convex mirror में कैसे समझ पाएंगे? देखो in case of convex, this is convex mirror का डायग्राम देखो। बस ये क्या दिखाई दे रहा है तुमको? कॉन्वेक्स मिरर। तो मेंशन दिस थिंग, दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर। एंड जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे फ्रॉम द पोल, तो दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी इज आवर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज ए डैश, दिस वन इज बी डैश, ए डैश बी डैश इज आवर इमेज। एंड ये यहाँ पे ऐसे क्यों इमेज फॉर्म हो रहा है? क्या उसका इसके पीछे जो रीजन अवेलेबल है? रूल्स फॉर रे डायग्राम के बाद हम लोग रे डायग्राम जब शुरू करेंगे ना, वहीं पे वो चीज हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट थिंग, देन देखो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे? रे कमिंग टुवर्ड्स द मिरर, so this is the direction of incident ray. This is direction of incident ray. yes, तो जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, कहां से मेजर करूंगा मैं? पोल से लेकर इमेज, दैट इज इमेज डिस्टेंस। अगेन पोल से लेकर फोकस, दैट इज फोकल लेंथ। नेक्स्ट चीज पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस, एंड नेक्स्ट चीज क्या है देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये चीज हो गया पोल का जो लाइन ऑफ एक्शन। बस और क्या चीज अवेलेबल है देखो, इतना ही देखो। पोल टू इमेज, दैट इज इमेज डिस्टेंस v, it is taken along incident ray, so this is plus v. Pole to focus, focal length f, small f, taken along incident ray, so this is plus f. Pole से लेकर c, that is r, radius of curvature, it is along the incident ray direction, so plus r. Yes, another thing, pole से लेकर object, that is object distance u, opposite to incident ray हो रहा है, so this is minus u. ये पार्ट को अच्छे से फिल करो। Then upward height with respect to principal axis, so height of object, this is positive. Downward height with respect to principal axis, यहाँ पे downward image में शो नहीं किया हूँ, upward image, तो ये है तुम्हारा height of image, and upward height with respect to principal axis positive. And principal axis should be drawn, must drawn in such a way that it must coincide with x axis. I have drawn like this. So this is about the sign convention available in spherical mirror. देखो कितना easy. तो जो भी हम लोग अभी अप्लाई किए हैं ना, उसको लैंग्वेज में 2-4 पॉइंट पे हम लोग लिख देंगे अभी। तो यहाँ पे और एक चीज देखो, मिरर के फ्रंट पे जो अवेलेबल होगा दैट इज रियल, बिहाइंड द मिरर दैट इज वर्चुअल। तो दोनों चीज को देखो। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर उसका फोकस उसके फ्रंट पे ही अवेलेबल है, तो कॉनकेव मिरर हैज रियल फोकस। यस, तो कॉनकेव मिरर के पास क्या है? रियल फोकस अवेलेबल है। कॉनकेव मिरर रियल फोकस। लेकिन देखो इधर बिहाइंड द मिरर फोकस अवेलेबल है, तो कॉन्वेक्स मिरर that is associated with virtual focus. Is that clear? I think it is very simple to all of you. So now write the points available in new Cartesian sign convention. तो साइन कन्वेंशन के बारे में नो मोर डाउट्स। नाउ विल राइट द पॉइंट्स, दोस गोल्डन पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट यू हैव टू राइट? ऑल द डिस्टेंसेस
must measured from pole of a spherical mirror. Pole of a spherical mirror. Next point, upward height with respect to principal axis. Upward height with respect to principal axis taken as positive. नेक्स्ट चीज क्या है, डाउनवर्ड हाइट विथ रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस तो टेकन एज नेगेटिव, इट इज टेकन एज नेगेटिव। तो पॉइंट याद है तुमको। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंसेस मेजर्ड, distances measured along the incident ray और दूसरा क्या है, opposite to incident ray। तो distances measured along the incident ray taken as positive and opposite to incident ray taken as नेगेटिव। ये पॉइंट भी हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। देन लास्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस मस्ट ड्रॉन इन सच अ वे दैट इट मस्ट कोइंसाइड विथ एक्स एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस मस्ट ड्रॉन इन सच अ वे दैट it must coincide with x-axis. I think these points are very simple to all of you. So this is about our what? This is completely our new Cartesian sign convention. Wait 1 minute. Okay. So this is our new Cartesian sign convention as per NCSC. These are the 4 points as per new Cartesian sign convention. Make your note properly. After this we will discuss rules for obtaining the ray diagram in case of spherical mirrors. Okay, come to next slide. कितना टाइम हुआ? Yes. Rules for obtaining image in case of spherical mirrors. यहाँ पे मैं तुमको एक अच्छा बात बोलने वाला हूँ अभी। देखो, सपोज मैं रैंडमली एक कॉन्केव मिरर ड्रा कर रहा हूँ और हमको पता चल गया ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड ये चीज याद रखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ, एंड पी टू सी दैट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ जो रिलेशन क्या है, देखो r इज इक्वल टू एफ, r इज इक्वल टू 2f। इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। ये रूल कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा। तो बात याद रखो, यहाँ से यहाँ तक का P से लेकर F का डिस्टेंस जो भी है, F से लेकर C का डिस्टेंस भी सेम टू सेम। तो मेरा पॉइंट क्या था, देखो, तो मैं तुमको पूछूंगा कोई भी पॉइंट स्फेरिकल मिरर का किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो। सो क्या करना चाहिए तुम, हाउ वी कैन ड्रॉ ए नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द स्फेरिकल मिरर। देखो मैं पॉइंट चूज कर रहा हूँ, ये पॉइंट सपोज ये मैं पॉइंट चूज कर रहा हूँ, बस ये पॉइंट पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करें। तो सिंपली ज्वाइन दैट पॉइंट टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नॉर्मल हो गया। ओके, फॉर दिस सरफेस दिस इज द नॉर्मल। तो मैं पूछूंगा तो ये पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा,
कोई भी पॉइंट पे सी के साथ ज्वाइन कर देने से जो भी लाइन मिलेगा ना, दैट इज द नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया। मेरा कहने का पॉइंट समझ में आ गया बस। तो हाउ वी कैन ड्रॉ ए नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द स्फेरिकल मिरर, तो जॉइन दैट पॉइंट टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नॉर्मल हो जाएगा। यस। तो और एक चीज यह ध्यान रखो, तुम लोग बोलोगे सर पोल एक पॉइंट अवेलेबल है ऑन द स्फेरिकल मिरर, एंड पोल भी किसके साथ कनेक्शन पे है, सी पॉइंट के साथ। तो प्रिंसिपल एक्सिस को पी पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर पे नॉर्मल हम लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं, दैट इज कंप्लीटली ट्रू। यस। तो प्रिंसिपल एक्सिस भी एक नॉर्मल जैसा बिहेव शो करेगा तुम्हारा एट पॉइंट पी ऑन द स्फेरिकल मिरर। ध्यान में रखो इसको, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। ओके, तो चलो नेक्स्ट रूल्स। रूल्स के बारे में हम लोग को क्या डिस्कशन करना चाहिए, देखो इधर ये क्या है हमारा कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर हो गया। बस। और नेक्स्ट क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर भी मैं तो क्या हूं, देखो क्लियरली दिखाई दे रहा है सबको। यस। तो इसको बस हमको रिमूव करना चाहिए। ओके, लेट्स हैव ए लुक। तो पहला रूल क्या है, ए रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट passes through the focus और appears to come from the focus। ऐसा कहने का मतलब क्या है, देखो सपोज मैं ले रहा हूं दिस इज योर इंसिडेंट रेज, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है अभी, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, तो रिफ्लेक्टेड रेज passes through the focus, ये है तुम्हारा रूल। लेकिन यहाँ पे देखो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड। तो नेक्स्ट पिक्चर पे देखो उसी पॉइंट को हम लोग अप्लाई करेंगे, रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पैसेज थ्रू फोकस नहीं, यहाँ पे तो डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर। तो यहाँ पे डाइवर्स का सिग्नल तुमको दिखा देगा, देखो बस ये वाला चीज। एंड इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करने से तुमको ऐसा फील होगा जैसे कि वो फोकस से ऐसे हेमर्ज हो रहा है। यस, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस। तो appear to come from the focus, ये तुम्हारा इंसिडेंट है, दिस इज रिफ्लेक्टेड। सो रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus in case of concave mirror and appears to come from the focus in case of convex mirror। उसका ऑपोजिट क्या होगा, कोई भी रे फोकस देकर जैसे आ रहा है, देखो इफ ए रे इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर आफ्टर passes through the focus। सो डायग्राम में क्या बोलने वाला हूं, देखो ये है तुम्हारा डायग्राम। मेरा कहने का मतलब ये जो रे दिखाई दे रहा है तुमको, ये फोकस को क्रॉस करके आ रहा है, देखो। यस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट passes through reflected in such a way that it is parallel to principal axis। A ray coming through the focus after reflection goes parallel to principal axis। यहाँ पे वो डायग्राम कैसा होगा, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स। देखो मैं जो रे अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है, देखो जैसे कि वो फोकस देकर ऐसे ट्राई कर, देखो ऐसा फील हो रहा है। उसको एक्सटेंड करने से वो फोकस देकर आ रहा है, जैसे ऐसा फील हो रहा है, देखो उसको एक्सटेंड करने से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो रोए फोकस को क्रॉस करके चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो वो इंसिडेंट हो रहा है ना, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कैसे चला जाएगा। तो ये पॉइंट समझ में आया, दो पॉइंट वेरी सिंपल पॉइंट। दिस इज फॉर इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, लेफ्ट साइड में मैं जो किया हूँ दिस इज इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर में ड्रॉ कर रहा हूँ।
यस, एंड यहाँ पे दिस इज इन अकॉर्डेंस टू कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान में रखो, कॉन्वेक्स मिरर क्या है? जिस स्फेरिकल मिरर इन व्हिच द आउटर बल्जिंग सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट्स द कॉन्वेक्स मिरर, एंड इनर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो दैट इज कॉन्केव मिरर। दिस इज माय पॉइंट। तो रे coming parallel to principal axis passes through focus or appears to come from the focus, and ray passes through focus after reflection goes parallel to principal axis। यहाँ पे देखो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि फोकस देकर आ रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यस, दैट्स द इन लैंग्वेज यू कैन राइट आल्सो इंसिडेंट रे coming parallel to principal axis, coming parallel to principal axis। तो रिफ्लेक्टेड रे का क्राइटेरिया क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे दो ही चीज, passes through focus, passes through focus in case of concave mirror। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं concave mirror, and appears to come from the focus, appears to come from focus in case of convex mirror। I think this point is clear to all of you। नेक्स्ट, ये तुम्हारा फर्स्ट। सेकेंड रूल में क्या हम लोग डिस्कशन किए? ए रे कमिंग टुवर्ड्स द मिरर आफ्टर पासेस थ्रू द फोकस, इंसिडेंट रे approaching towards mirror, approaching towards mirror with passes through focus, passes through focus। रिफ्लेक्टेड रे का आंसर क्या होगा? passes through focus और appears to pass through, passes और appears to pass, appears to pass, क्योंकि दो चीज हो रहा है ना, दिस passes through the focus but in that case appears to pass through the focus like this। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा इसमें? रिफ्लेक्टेड रेज goes parallel to principal axis, goes parallel to principal axis। This is the point। yes, and और दो चीज क्या है देखो, आई थिंक ये सारा का सारा रूल क्लियर हो गया। दो ही रूल हम लोग दो मिरर के लिए हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट कम टू थर्ड एंड फोर्थ रूल। थर्ड रूल क्या बोल रहे हैं अभी देखो, हो गया पिक्चर तुमको दिखाई दे रहा है देखो। तो फोकस ऑन द स्क्रीन। देन थर्ड रूल को हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। देखो ये हमारा रूल नंबर 3, कोई भी इंसिडेंट रहे हमारा ही को ऐसे क्रॉस करके आ रहा है टुवर्ड्स द मिरर। मैं क्या बोल रहा था अभी देखो, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? रिट्रेसेस इट्स पाथ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो स्फेरिकल मिरर का कोई भी पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ कनेक्शन करने से क्या होगा? नॉर्मल ही शो करेगा। तो अभी वो क्या हो रहा है? नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। मैं बोला था देखो, ओके लेक्चर को सिक्वेंशियली कंप्लीट करो। तो इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। री मींस अगेन, ट्रेस मींस टू चेंज, ओके रिट्रेसेस इट्स पाथ। देन इन केस ऑफ देखो कन्वेक्स में क्या होगा? ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो रे सी देकर ऐसे क्रॉस करने वाला है ऐसे।
तो इसको मैं डार्कन कर रहा हूं थोड़ा, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो रे टी को क्रॉस करके चला जाएगा। तो यहाँ पे वो इंसिडेंट हो रहा है ना, ये इंसिडेंट रे, तो दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, सो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। डन, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड। यस, नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट क्या है, कोई भी इंसिडेंट रे पोल पे देखो थीटा एंगल पे इंसिडेंट होगा तो इसमें इसके बाद क्या होगा, वो थीटा एंगल क्रिएट करके वो रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा क्यों होगा बोलो, क्योंकि तो P एंड C जो लाइन वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस भी एक नॉर्मल का बिहेवियर शो करेगा एट द पॉइंट ऑफ P। तो दिस इज योर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा। इन दैट केस आल्सो सेम डायग्राम वी कैन ड्रॉ, P पॉइंट पे कोई भी रे देखो इंसिडेंट हो रहा है ऐसे, is that clear? So this is incident ray, this is reflected ray, angle of incidence is theta, angle of reflection will be theta. So this is your rule number 4. तो थर्ड में क्या दिखाई दे रहा है, इंसिडेंट रे passes through the center of curvature, इंसिडेंट रे passes or appears to pass through center of curvature। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा इसमें, रिफ्लेक्टेड रे बोथ द केसेस रिट्रेसेस द पाथ। ये कौन सा केस अप्लाई हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस, दो चीज हम लोग पढ़े थे ना। तो रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेसेस इट्स पाथ, देन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द स्फेरिकल सरफेस और स्फेरिकल मिरर एट एन एंगल थीटा। इंसिडेंट रे strikes the reflecting surface by making an angle theta, by making an angle theta। तो reflected ray move away by making an angle theta at point P, yes, with respect to क्या लिखना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस। In that case reflected ray move away from reflecting surface or spherical mirror or spherical mirror by making an angle theta at P with respect to principal axis। I think these 4 rules for the ray diagram is clear to all of you. It is very basic and very simple. Yes, so try to observe the diagrams properly। तो कैसे मैं डिनोट कर रहा हूँ, किसको कैसे डिनोट कर रहा हूँ, बस उसको ऑब्जर्व करो, तभी जाकर सब कुछ समझ पाओगे, तभी जाकर सब कुछ समझ पाओगे तुम लोग। ओके, यहाँ पे रहने दो, चलेगा। यस, हैंडराइटिंग तो क्लियर दिखाई दे रहा है तुमको, डायग्राम तो क्लियरली विजिबल है। सो दिस इज अबाउट द टुडेज सेशन एक्चुअली। सो विद दिस आई वांट टू कंक्लूड दिस टुडेज लेसन, दैट इज आवर लेक्चर नंबर 5, and in lecture number 5 regarding your sign convention basically we have covered, starting from remaining terms related to spherical mirror we have completed this thing। okay, so this is all about for lecture number 5। so stay tuned for next update and try to like, share and subscribe our channel। okay, so पढ़ाई करते रहो अच्छे से, नोट्स को मेंटेन करते रहो। तो आफ्टर सम डेज वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल, आफ्टर द मिरर फार्मूला, रे डायग्राम एंड मिरर फार्मूला के बाद we will discuss numericals। okay, sufficient numerical I will discuss in this channel। so stay tuned for next update। thank you, have a nice day।